Assalamu alaikum students. Today I am going to continue with the same topic, the United Nations. In previous lecture I told you that how United Nations work to eliminate the social evils from the world. Their mission was to prevent wars and the causes of the war. But let us not despair, for there is one part of the work of the United Nations that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. Men and women from different parts of the world, of different races and religions, sit together, think, plan, and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before. This work brings the workers closer together than anything else can. It also brings them closer to the people of the land which they are trying to help. Who would go to war with the people to whose betterment one has given several years of one's life? Now, as I told you before, the United Nations was not so much successful in preventing the ongoing wars, but they were quite successful in preventing it by eliminating the cause of it, or the roots of the evil which actually turn into war. Now, here they are talking about it, that how they work on it. They make up teams of people from different parts of the world, and then they send them to different countries where they sort out their problem. Now, it is quite understood that when the different people from the different part of the world work together, they get closer. And when they work in a foreign country where they never have been before, the people of that country also welcome them, and they won't be going on war with the people who are helping them out in their difficulty. यहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन के उस निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके तहत आपस में दूसरे काफ़ी मुल्कों की दोस्ती हो जाती है, यानी कि वो टीम्स ऐसी बनाते हैं कि वो एक कंट्री की लोगों को एक टीम में शामिल नहीं करते, बल्कि वो दुनिया के एक्सपर्ट्स को लेकर और उनकी एक टीम बनाई जाती है. जब वो टीम आपस में काम करती है तो उसमें जो गैर मुल्की लोग होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट से दुनिया में बिलोंग करते हैं, वो आपस में जब मिल के काम करते हैं तो दोस्त बन जाते हैं. और इसी तरह से ये टीम ऐसे मुल्कों में भेजी जाती है जहाँ पे वो पहले कभी गए भी नहीं होते, और वहाँ पे जब जाके वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वहाँ के रहने वाले भी ऐसे लोगों की कौम से क्यों लड़ेंगे या जंग पे क्यों जाएंगे. तो ये एक यूनाइटेड नेशन का फॉर्मूला था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा. Here is an example of what international work means. Canals, rivers, and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half of the people live on the great rivers. So the United Nations organized the Inland Water Transport Tour of Asian experts to view the operation of waterways. In other parts of the world, members of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India so as to learn about the problems. The Asians then went to Europe, where they visited shipyards and waterways in France, Germany, and the Netherlands. So here they are telling you that how the international work goes. They team up the people from the different countries, and then they send them to study on a different area. So United Nations actually organized one mission under the Inland Water Transport Tour of Asian experts to view the operation of waterways. Of course, in the Far East countries there are more water, the rivers are there, and basically the people over there have markets on the rivers as well. They use boats to transport themselves from one place to another. The goods are transport and all that. So for that, United Nations want the people of different part of the world where there are water, river routes and all that. They want them to visit those places and study that how it works. So they teamed up with in India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. These members were sent to study the water works or the water routes of Thailand, Burma, Pakistan, and India, and then they later on were sent to France, Germany, and Netherlands, and let them study the ways they work over there,
how the transportation work, what are the ways they used to travel from rivers, or is it possible to bring that technology in their own country. So this way United Nations actually group up the members of different part of the world, make them friends as well, because when they work together they become friends, and then they let them study the technology of other countries, and then later on these countries go back to their own places and work on it, that whether they can apply it in their own country or not. So यहाँ पे वो एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इंटरनेशनल वर्क क्या हो सकता है. यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर ऑफ एशिया. यहाँ से एशियन एक्सपर्ट्स को उन्होंने ग्रुप अप किया और उनको भेजा स्टडी करने के लिए पहले थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि यहाँ के जो निज़ाम है नहरों का और सिस्टम पानी का और रूट्स का, ये सब को स्टडी करने भेजा. और उसके बाद ये उनको यूरोप भेजा गया, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, और वहाँ की स्टडी करने को कहा गया कि वहाँ का निज़ाम क्या है, किस तरह से बोट चलती हैं, क्या निज़ाम है, ये सब कुछ. और अगर वो अपना टेक्नोलॉजी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझ के अपने मुल्कों में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फार ईस्ट कंट्रीज़ में एक नहर का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लोग बोट्स पे ट्रैवल करते हैं, तो उनको ये सिस्टम बहुत फिजिबल होता है, वो इस चीज़ को एक अपने डेली ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे एक्सपर्ट्स को जहाँ से ये अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर वो यूरोप में भेजे गए कि वहाँ पे स्टडी करके आएँ कि वहाँ पे क्या है और उनके पास क्या नहीं है, और इस तरह से एक्सचेंज करें अपनी नॉलेज को. They saw new types of boats in England and Scotland. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio and Mississippi River and along the coastal canals. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful in Asia. The members of the tour returned to their countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. United Nation Day is celebrated on 24th October every year. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the United Nations and its ideals. On United Nation Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the United Nations, we hope, will one day be looked upon as an important event in world history. So, as I explained before, all of it, that the experts of the Asian countries visit all the Western countries. First they went to Netherlands, Germany and all that, and then they went to England and Scotland, and then they studied that how their boats work, what type of boats they are used over there. And then they went to America, and then they also studied over there the river Mississippi transportation and all that, canals and the technology. Later on, they also discussed their own issues with the members of those Western countries, and then they brought this information back to their own countries. Over there, they not only imitated, it is not possible because, of course, the weather, the water routes are quite different from West. So they can't apply all of the technology, but they can sort out and can make things better for their own. So this is one kind of international work which United Nation actually promotes. And United Nation Day is celebrated on 24th October, even though the date of the formation of United Day is different, but it is celebrated on 24th October every year. And then on that day, the patriotism is not towards your own country, but it is to show the loyalty towards the nation, United Nation. It is United Nation Day, and their motto was to join hand together and work for common goodwill of the world. So here on 24th October, United Nation Day, people pledge anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. They remind themselves that they are here or they have joined hands together to promote the goodwill, brotherhood and peace in the world. So it is celebrated on 24th October. So
जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एशिया के एक्सपर्ट्स को जब भेजा गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो रिवर्स पे इस्तेमाल होती है उसको देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स यूज़ हो रही थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में। फिर उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट गए और वहाँ पे ओहियो और मिसिसिपी रिवर्स को उन्होंने स्टडी किया, वहाँ के कोस्टल कैनाल्स को स्टडी किया और वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन और मेथडोलॉजी को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने ये जो मेंबर्स थे स्टोर के, उन्होंने उन उधर के एक्सपर्ट से अपने मसलों को डिस्कस किया और उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने मुल्कों में वापस चले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने उसकी कॉपी नहीं की बल्कि ये देखा कि कितना वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या चेंजेस वो ला सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऐसे ही इंटरनेशनल कामों को सपोर्ट करता रहा है और करता रहेगा। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन एक ये वादा जो यूनाइटेड नेशन ने किया कि वो एक पूरी दुनिया में ब्रदरहुड और पीस को फैलाएंगे और सपोर्ट करेंगे, उस वादे को फ्रेश किया जाता है। लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं इसी मिशन और इसी मोटो से कि वी शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। ये जो मकसद है यूनाइटेड नेशन का, उस दिन वो रिवाइव किया जाता है, रिकॉल किया जाता है और उस वक्त पेट्रियाटिज़म इस मिशन और इस मोटो के लिए होती है, ना कि अपने अपने मुल्कों के लिए। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का ये जो काम है कि दुनिया में लोगों की मदद करना और मुल्कों की मदद करना, ये कहा जाता है कि एक दिन हिस्ट्री में, तारीख़ में यूनाइटेड नेशन के बनने को बहुत अहमियत दी जाएगी कि ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हिस्ट्री में हुआ। Now this is the picture which tells you or shows you that how the world takes the United Nations Day. There are many entities that aim towards conflict, but only one aim towards peace, the United Nations. This is one way of celebrating the United Nations Day, by putting forward its mission that many organizations are working to bring conflict in the world, but there is only one which aim to bring peace towards in the world, and that is only the United Nations. Let us see how the United Nations is organized. The central and principal organ of the United Nations is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the Assembly, but each member has only one vote. The General Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. It elects its own president at each sitting. Besides 6 main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sittings of the Assembly. So United Nation का जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है वो जनरल असेंबली है। इन जनरल असेंबली वहाँ पे हर नेशन के 5 रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकते हैं। हर रिप्रेजेंटेटिव को वोट देने की अथॉरिटी नहीं होती। वो जो 5 मेंबर हर कंट्री से वहाँ पे जाके बैठते हैं, वो एक टीम होते हैं और उनका एक ही वोट होता है। जनरल असेंबली में जितने भी मुल्क बैठे हुए होते हैं, जितनी भी नेशंस को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, जो इसका पार्ट होते हैं जनरल असेंबली में, वो मिल के दुनिया में अमन लाने की जितने प्रॉब्लम्स हैं या सॉल्यूशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं, और जो भी चीज़ उनके सामने वो रखी जाती है प्रेसिडेंट के सामने, वो डिस्कस की जाती है। सारे मुल्क अपने अपने लेकर आते हैं प्रॉब्लम्स और उसको सॉर्ट आउट करने के सॉल्यूशंस वहाँ पे डिस्कस होते हैं। वहाँ पे 6 मेन कमिटीज़ तो एक नॉर्मल काम के लिए बनी हुई हैं, और मज़ीद स्पेशल कमिटीज़ बनाई जाती हैं जब दूसरा कोई ऐसा मसला आ जाए जिसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट हो। और ये रेगुलर जो 6 कमिटीज़ हैं वो रेगुलर सिटिंग, यानी कि जो एक सिटिंग होती है जनरल यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, उसके मामलात को देखती है। तो यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए जनरल असेंबली भी इसकी बहुत बड़ी होती है, और इनकी मीटिंग्स इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं, वो साल में कुछ ही होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो बहुत प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और एक सेटअप है जो उसको फॉलो किया जाता है। The Security Council is made of 15 members. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia, and the United States. Of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms.
Matters of importance have to be supported by every one of the five permanent members. That is, each one of these nations has a veto. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. The chief officer of the United Nations is a Secretary General. He has important political responsibilities. Security Council is also the part of the General Assembly, because from the General Assembly there are 15 nations which constitute the Security Council, and by the name of it you can understand that it is going to deal with all the security concerns of the world. अब यहाँ पे चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स को परमानेंट मेंबर्स कंसिडर किया जाता है. ये वही कंट्रीज़ अलाइड फोर्सेस हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बन के उन्होंने ये इरादा किया कि यूनाइटेड नेशंस वाली ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाए या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, और यही कंट्रीज़ फिर सिक्योरिटी मेंबर्स के परमानेंट मेंबर्स भी कंसिडर किए जाते हैं. बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो हर 3 साल के बाद चेंज होते हैं, 2 ईयर टर्म्स के लिए होते हैं, और ये जनरल असेंबली की वोटिंग पे ही होते हैं. जब ये 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के बन जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अहम मसलों पे इनकी वोट की बहुत अहमियत होती है. और ये जो 5 अहम जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास वीटो पावर होती है, यानी सबके वोट्स एक तरफ और इन 5 कंट्रीज़ के वोट एक तरफ. इनमें से कोई एक भी कंट्री किसी भी डिसीजन के लिए नो कह दे तो फिर टेम्परेरी तौर पे वो मसले को ड्रॉप कर दिया जाता है. तो ये होता है वीटो पावर का इख्तियार. चीफ ऑफिसर जो यूनाइटेड नेशन के हैं वो सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं, और इनकी सारी ड्यूटीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो पॉलिटिकल हैं. अब यहाँ पे वो अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो दुनिया के पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं. This is the picture of United Nations building in America, and you can see the flags of all the countries which are part of United Nations. This is the General Assembly House. This is how they sit for any kind of discussion in General Assembly. You can look that each of the desks have 5 to 6 seating arrangement. That means each nation sit together, and they become the part of this big assembly. And look at the number of the participants or the nations which take part in United Nations meetings. Now this is the Security Council, the council of the fixed members and the other 10 members, and they discuss the important issues, and their votes are have more weightage than the rest of the General Assembly members. The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of the Security Council. He serves for a term of 5 years until the election of his successor. Every year, the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. There is a staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. There are also other special branches of the Secretariat with hundreds of employees at various other centers. There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the United Nations. United Nations employees come to the Secretariat from nearly every country on earth, but they do not represent their countries. Their outlook has to be international. General Assembly selects Secretary General, and his term is only for 5 years, and then they re-elect, or they do the elections again, and then there is a different or the same Secretary General as per the voting decides by the General Assembly, and it is also approved by Security Council. Now, every year, Secretary General's task is to make up a report of all the work which is done in United Nations. It is said that in the world, United Nations headquarter or office is the biggest, which actually has the workers working from different countries, almost all in the world. That means all of the world representative work in this headquarters of United Nations in New York, and their
outlook has to be very international. They are not working for their own country, but they are working on international level. So their mindset is totally what United Nations want, that is to work for the world and not for your own country. ना यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो मेन हेड हैं, वो 5 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होता है और जनरल असेंबली की वोटिंग और सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद एक सेक्रेटरी जनरल फिर बनता है. अब सेक्रेटरी जनरल का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि वो हर साल एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे इम्पॉर्टेंट काम की रिपोर्ट देते हैं जनरल असेंबली को. इसके अलावा ये कहा गया है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं जैसे कि 3,500 पीपल, और ये सारे दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आके काम करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी कंट्री को, लेकिन उनका अपना जो आउटलुक है या उनका जो मिशन होता है या उनका जो काम होता है वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से होता है, और सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए नहीं बैठे हुए होते बल्कि वो यूनाइटेड नेशन का जो एक अपना मिशन है वो इंटरनेशनल है और वो उसके लिए काम करते हैं. सो दिस वॉज द सेटअप ऑफ यूनाइटेड नेशन ब्रीफली, एंड दिस इज़ फॉर टुडे. In the next lecture, I will tell you about the organizations which are running under United Nations. Thank you.